छोड़ो यार इसको, मैं उसको उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द इवेंट टू डिस्कस दैट। ये जो कुछ हमारे राजनीतिक दल है हमारे विरोध में हो, हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, बट दिस काइंड ऑफ पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अनएक्सेप्टेबल। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करनी है 2030 में, उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है हम ओलंपिक्स भी करेंगे 2036 में। तो उसका इकोसिस्टम बनाना, उसके बारे टू प्रोड्यूस दैट, उसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन, उसका मैसेज आपके माध्यम से लोगों तक ले जाना, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So we did have a chance to speak to OMCs and they said that they will work in the national interest as far as... They are always working in national interest. Yeah. And ONGC does, even if we may have assets offshore, we will work in national interest and that will be our... They are working in national interest. They are good corporate citizens. When I spoke to Arun Kumar Singh ji, he said for the next 10 years my vision is that whatever the government wants, even if it means increasing stake in Russian assets, we will do that. उसको छोड़िए, देखिए अरुण जी की स्टेटमेंट मैंने भी पढ़ी है, सो लेट्स नॉट टेक आउट बिट्स एंड पीसेस फ्रॉम इट। उन्होंने ये कहा कि दिस इज अ प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी, जहां से सस्ता वो स्पॉट में खरीदते हैं, जहां से मिलेगा वो ले लेंगे। आफ्टर ऑल उनकी ड्यूटी, सरकार की ड्यूटी है अपने कंज्यूमर्स के लिए, तो इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू द... I know you are looking for a story of a different kind. This is not the event for that. सर, प्रधानमंत्री की मां को मुझसे गाली दिया गया। छोड़ो यार इसको, मैं उसको उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, बट दिस इज नॉट द इवेंट टू डिस्कस दैट। मैंने अलग भी स्टेटमेंट किया है, जैसे ये जो कुछ हमारे राजनीतिक दल है हमारे विरोध में हो, हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, बट दिस काइंड ऑफ पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर अनएक्सेप्टेबल एंड आई कंडेम इट इन द स्ट्रांगेस्ट टर्म्स। So we all took our oaths here, I hope you are going to follow the oath. You are going to be playing more sports. But it seems like you are following the oath. I just wanted to ask I am following this. I mean, it's not that sports. You see, I am a little older than all of you, but I have been a passionate lover of sports. I mean, my problem is the kind of life I lead. I don't get a chance to, go around playing soccer, etc. But I follow sports events. I'm nostalgic about it, and I think all of us, sports is something very special. It's not just participating in a competition. I think one of them, Lalitji or Madam from IOCL, she put it very well. She said it's not just about winning tournaments. It is the sense of participation. Sports is an equalizer. When you come on to the turf, and I'm so happy that they've got a very world-class turf here. When you come on that, there, it doesn't matter who you are, what you are competing on the basis of equality. So when a youngster wins a World Chess Championship, you know what it does to people. It's not one, then several of them. Other people say they come up. I mean, you need more sporting icons. We have sporting icons. But they can't all be confined to one game. They can't all be confined to, let's say, cricket. Now, but cricket also did well because we have been able to produce an economic ecosystem around cricket. Football is one which you can easily do that. You can play football. आप कहीं गांव में, आप कहीं भी थोड़ी सी जमीन हो, you can play football. जैसे Brazil में it's an obsession. But I see it's an obsession here also. I was just speaking to the head of the Sodeva Academy. He gave up a law career to do this full time. One of the things he said is that he thinks that our women's soccer team may qualify before the men's soccer team for the World Championship. अभी 2 मैच रह गए. So आप देखिए क्या-क्या changes हो रही हैं. The country is doing phenomenally well economically, as I mentioned. But the sports front, on so many different things, see how the benefits of development are going down to the people who need it the most. हमारा उज्ज्वला स्कीम जो है, जब मोदी जी ने, I'm sorry to talk about energy, जब उन्होंने दायित्व संभाला था 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे. आज वो 14 करोड़ चलते चलते 33 करोड़ हो गया. और उज्ज्वला, which is 2016 में योजना शुरू की थी, that is going to 10 crore 30 lakh people and 80% of it is in rural areas. So our sisters and daughters in rural areas, they don't have to take toxicity. By the way, भारत एक ऐसा देश है डेवलपिंग कंट्रीज में जहां आपकी क्लीन कुकिंग गैस either through an LPG cylinder or through pipeline or through some means is available to every home throughout the country. Other countries में अभी भी because उनकी नेशनल ग्रिड नहीं है, तो
अब ये जो कंपनीज है डूइंग वेल ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, अब वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और आपके माध्यम से मैसेज जाएगा तो उनको और इंकरेजमेंट मिलेगी। थैंक यू।